Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula. As we have been talking about various art integrated projects under Ek Bharat Shresht Bharat category, where we need to give our students art integrated projects where various subjects will be integrated from classes 1st till 8th standard. And for 9th and 10th, there will be separate projects for each subject. Like there are five main subjects, so they have to make 5 different projects. Right. So, my dear educators, today we're going to discuss one more project. Till now, we have discussed about food, about population. Now, what else you can give to your students? If I talk about, you can give your students about biodiversity as well. How we can connect the same with different subjects, what sort of activities can be planned. So here I go. So my dear educators, Ek Bharat Shresht Bharat for a paired state project, because my school is in UP, so I am giving you examples from UP and Arunachal Pradesh as a paired state. Right. So my dear educators, though you can pair any of the states as per the guidelines given to you, like wherever your school is. If it's in Haryana, another state will be paired. If it's in Punjab, you will be pairing up different state. So we are talking about exploring India's natural treasures, biodiversity, wildlife, deforestation in Uttar Pradesh. And here I have written and Meghalaya, right? Because last year it was Uttar Pradesh, Meghalaya, and Arunachal Pradesh. Now, this project is focusing on Uttar Pradesh and Meghalaya. This year, though, recently we have got new instructions. As per that, we have to integrate UP with Arunachal Pradesh. So, accordingly, you can make some changes. This is just example how you want to change it. That is entirely up to you. So, my dear educators, here are some of the activities on biodiversity, wildlife, and deforestation for 2 different Indian states, that is Uttar Pradesh and Meghalaya. You can give your student a project on habitat research, have your students research the different habitats found in UP and Meghalaya, encourage them to investigate the characteristics of each habitat. हर habitat की characteristics, उसकी unique features क्या हैं, वहाँ के flora, fauna यानी plants and animal life के बारे में research करें. Right, obviously virtual field trips can be organized. They can Google it, they can find something on YouTube or maybe on another platform. Right, so students can create a chart or maybe infographic highlighting the differences between the 2 states based on the habitat. And if I talk about the endangered species research, ask your student to research endangered species in Uttar Pradesh and Meghalaya, or maybe you will be doing Uttar Pradesh and Arunachal Pradesh. Encourage them to investigate the reasons for their decline, why the number is declining, why it has declined, and the efforts that have been made to conserve them. And students, they can create a presentation or the poster highlighting the species and the steps to be taken to protect them. सब कुछ नहीं करना है. I'm giving you options. Either you can let them explore different habitats, let them explore the endangered species, let them come up with a presentation, let them come up with an infographic, whatever you want to do. Either you can give group-wise projects like that. Some of the students, they are talking about habitat. Some of the students, they are going ahead and researching about the endangered species and presenting the same in any of the language of their choice, based on obviously the rubrics as I have shared in my previous video as well. So wildlife conservation case studies can be given. Like case studies, a kind of action research. Make sure like your middle school students, especially 6 to 8, you give this kind of project to them. Provide them with the case studies of successful wildlife conservation efforts in the UP and Arunachal Pradesh. For example, the conservation efforts for Gharial in Uttar Pradesh or maybe Asiatic elephant in Meghalaya. Have them analyze the factors that contributed to the success of these efforts and present their finding to the class. Let them explore about it, right? So one group is talking about endangered species, one is talking about the efforts that have been made to conserve these species. And then deforestation impact research. Ask your student to research the impact of deforestation in Uttar Pradesh and Meghalaya, and now you will be doing for AP, right? Arunachal Pradesh. Encourage them to investigate uske social, logical, economic, ecological consequences of deforestation kya ho sakte hain, and to propose solutions for mitigating its effects. Have them present their findings to the class, highlighting the importance of sustainable forestry practices. क्या क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें दैट शुड लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबिलिटी, एंड उसमें एक इंडिविजुअल का क्या रोल रहेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहेगा, कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं
फॉरेस्ट का कंजर्वेशन। सो अभी तक हमने क्या बात किया, या यू कैन टॉक अबाउट हैबिटेट, यू कैन टॉक अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज, यू कैन टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यू कैन टॉक अबाउट द डिफोरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स क्या है, क्यों हो रहा है डिफोरेस्टेशन, और जो उसके इम्पैक्ट है वो सोशल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, इकोलॉजिकल क्या है। तो अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली वो रिसर्च कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग तो एक है कि ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव लर्निंग है कि जिसमें हर बच्चा, द चाइल्ड टेक्स द ओनर्स और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क बीइंग असाइन टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप को आपने ये स्टूडेंट को बोला है कि ही विल बी कलेक्टिंग डेटा अबाउट द सोशल इफेक्ट, अनदर चाइल्ड इज फाइंडिंग about the economic effects, then ecological consequences. ये 3 है, and if there are more than that, 4th student will be compiling and preparing the questions, will be analyzing, will be preparing a report. I mean, together they are doing it. Everybody has been given a specific task to do. चलिए, biodiversity hotspot research can also be done. Have you student researched the biodiversity hotspots in Uttar Pradesh and Meghalaya or AP? Encourage them to investigate the unique biodiversity, किस एरिया की यूनिक बायोडाइवर्सिटी क्या है, इनको थ्रेट्स कौन से ये फेस करते हैं, मे बी हैबिटेट लॉस हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन, क्या क्या उसके और इफेक्ट हो रहे हैं, एंड दे विल बी एबल टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास, एंड दे कैन आल्सो हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग दीज एरियाज एंड द चैलेंजेस, उसको प्रिजर्व कैसे करना है, स्टेप्स उसके क्या हो सकते हैं, एंड उसके साथ में चैलेंजेस कौन से आएंगे, अब उसके बारे में बात कर सकते हैं, थ्रेट्स कौन से फेस कर रहे हैं, ये कैन एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। तो ये जो एक्टिविटीज जितनी भी हमने प्लान करी हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू अंडरस्टैंड द यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द पेयर्ड स्टेट, कि थ्रेड कौन से हैं, एफर्ट्स क्या करने हैं, सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव करनी है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इंटीग्रेट कर रहे हैं। So the final project can take various forms, right? Depending upon the child's learning styles, depending upon the activities you choose from the above. You can mix and match also, like 2 activities you have planned. Like for example, you're talking about endangered species and the conservation. तो उसका एक pair करके अलग बनाया जा सकता है. You are talking about flora and fauna, and then you are talking about कि वो deforestation, उसके साथ क्लब करके आप एक अलग project जो है वो बनाया जा सकता है. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होने के साथ में हैबिटेट कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो मतलब दीज थिंग इज अप टू यू, हाउ यू वांना पेयर अप, हाउ यू वांना मिक्स एंड मैच, एंड अकॉर्डिंगली गिव द असाइनमेंट टू योर स्टूडेंट्स, राइट? तो आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द पॉसिबल एग्जांपल्स। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे इन्फोग्राफिक प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन क्रिएट, just highlight, students can create an infographic, right? Summarizing their research on biodiversity, wildlife, deforestation in Uttar Pradesh and अरुणाचल प्रदेश में, कि उनका इन्फोग्राफिक बना रहे हैं। एंड इन्फोग्राफिक में इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, they can talk about habitat, endangered species, conservation efforts, deforestation उसका impact, and biodiversity के hotspot in each स्टेट, राइट? तो ये उनका एक इन्फोग्राफिक बन सकता है। इसके अलावा अगर आप वीडियो प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, यू कैन आस्क योर स्टूडेंट्स टू गो हेड विद अ वीडियो प्रेजेंटेशन, दे कैन शोकेस देयर फाइंडिंग्स। उसमें इंटरव्यूज, अगर लोकल पीपल हैं उनकी इंटरव्यू जो है वो ऐड करी जा सकती है, लाइक मे बी फुटेज ऑफ द वाइल्ड लाइफ नेचुरल हैबिटेट्स वो ऐड किया जा सकता है, सम एनिमेशंस ऐड की जा सकती हैं, एंड दे कैन गो हेड विद द ग्राफिक्स ऑल्सो, राइट? तो ये सब चीजें उसमें ऐड की जा सकती हैं, राइट? So the same can be done. So now if I talk about the classroom exhibition, right? So you can go ahead with that also. Like students, they can organize a classroom exhibition, displaying classroom exhibition हमने organize कर ली. The students, they are displaying their research findings, and the exhibition में क्या क्या कर सकते हैं, वो अपने जो posters हैं, charts हैं, photographs हैं, या में भी और भी जो visual aids वो use करना चाहें, they can use it and they can highlight the same, उसको display कर सकते हैं. आप इसमें parent walk-in भी organize कर सकते हो, and the pictures will also go into that project also when the parent walk-in is being organized for that. चलिए, आप इंटरैक्टिव वेबसाइट बच्चों को बोल सकते हैं बनाने के लिए। चिल्ड्रन, दे आर रियली वेरी टेक्स हैवी। sites.google.com पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाया जा सकता है, राइट? इंटरैक्टिव वेबसाइट वो बना सकते हैं टू शेयर देयर रिसर्च फाइंडिंग विद अ वाइडर ऑडियंस। ब्लॉग्स लिख सकते हैं इसके ऊपर, राइट? मल्टीमीडिया कंटेंट, उसके ऊपर वीडियो, फोटोग्राफ्स, इंटरैक्टिव मैप्स हो सकते हैं। पैडलेट के ऊपर मैप के थ्रू वो अपना
टाइमलाइन शो कर सकते हैं जब हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकली कैसे वो एंडेंजर्ड स्पीशीज होगी, पहले क्या था, तो एक टाइमलाइन आप हिस्ट्री से कनेक्ट करके बनाया जा सकता है। नाउ ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यू कैन गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो। नाउ रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट चोजन, द फाइनल प्रोजेक्ट शुड हाईलाइट, क्या क्या हाईलाइट करें, द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोजेक्ट का, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करना, तो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, हैबिटेट्स का, और मे बी डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट जो हो रहा है वाइल्ड लाइफ का इकोसिस्टम के ऊपर, उसकी बात करना, और उसमें इंडिविजुअल का रोल और मे बी ऑर्गेनाइजेशन का रोल कि कैसे वो प्रमोट कर सकती हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स को। तो ये सब चीजें जो हैं वो उसमें आनी चाहिए। Now here is the example of the rubrics for assessing the final project on biodiversity, wildlife and deforestation. तो वो उसमें रूब्रिक्स क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसमें आप एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रिसर्च, ये सारे आपके जो पैरामीटर्स आपने जो बच्चों को दिए हैं वो सारे कंप्लीट करे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो कंटेंट के आप अलग से रूब्रिक बना सकते हैं, ये मेन हेडर है कंटेंट, राइट, तो उसके अंदर डिस्क्रिप्टर्स होंगे आपके। मेरे पास नेक्स्ट हेडर पैरामीटर क्या है, क्रिएटिविटी, तो ये क्रिएटिविटी के डिस्क्रिप्टर्स हैं कि मेरे स्टूडेंट्स ने कितना उसमें चीजें कंप्लीट किया है। क्रिएटिविटी में ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी क्या है प्रेजेंटेशन में, इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल एड्स, infographics, videos, posters, ये सब चीजें, and clear and engaging presentation slide that captures the audience attention also. If I talk about organization, now logical organization of research finding into cohesive and well structured है, organized है, हर एक चीज हेडर और उसके थ्रू प्रेजेंट किया गया है विद इलस्ट्रेशंस, हेडिंग है, सब हेडिंग है, नहीं, ट्रांजिशंस की कैसे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर मूव हो रहे हैं, उसकी कनेक्टिविटी, उसके लिंक्स, राइट, टाइमिंग, तो ये सब इंपॉर्टेंट। एंड कोलैबोरेशन, उन्होंने पीयर के साथ कोलैबोरेशन किया, इंटरव्यूज लिए, डेटा कलेक्ट किया, राइट, कोलैबोरेशन अच्छे से रिफ्लेक्ट हो, तो दैट इज द अनदर रूब्रिक। सो दिस इज हाउ द अनदर प्रोजेक्ट on this biodiversity can be given to the students. So rest we shall be talking about in the next chapter, in the next video. Stay tuned, like, subscribe and share Mentoring the Mentors. Thank you. Have a nice day.